Hello everyone, my name is Gauri Nigurkar and welcome to my channel Everything Wow. तो आज का ये छोटा सा एपिसोड है. As promised earlier, today I am going to talk about my stay at the Westin in Singapore. We'll do a quick room tour and I'll tell you why I chose to stay there. So, without further ado, let's get this episode started. Though Singapore is a small city, choosing a convenient place to stay is important for sightseeing. Most of Singapore's major attractions are located around the Marina Bay area or on the Sentosa Island, making these areas an ideal and highly convenient choice for the tourists to stay. But staying on the Sentosa Island is a little more expensive, so I think staying on the mainland is a better option. And that's why I chose the Westin, which is right in the heart of the Marina Bay area in Singapore. After exploring the Singapore Zoo on day 2, I returned to the hotel to unwind for the afternoon. The Westin Singapore is truly a beautiful place. From the moment you walk in, everything feels so calm and elegant. You know, one of the unique thing about this hotel is its lobby, which is on the 32nd floor. So I just went in there, found a cozy corner, and just sat there, taking in the stunning views of the city below. And then after some time, I went back to my room. I am staying in the Westin in Singapore. ये एक बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड होटल है. इस होटल के ठीक सामने एक मेट्रो स्टेशन भी है, तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी एकदम बढ़िया है. एंड दिस इज़ वेरी सेंट्रली लोकेटेड, मतलब यहाँ से कहीं पर भी अगर मुझे जाना हो तो वो बहुत ही आसान है. यहाँ के जो रूम साइजेस हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं. रूम साइजेस, बाथरूम साइजेस, दे आर लाइक रियली स्पेशियस. तो चलिए अभी मैं आपको थोड़ा रूम टूर करवाती हूँ. The best part about this room is the view. I mean, मैं जैसे ही रूम के अंदर आई, मैंने ये व्यू देखा, मैं खुश हो गई. यहाँ पर पूरी स्काईलाइन नज़र आती है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ये नीचे जो है, ये रोड है. आई एम राइट नाउ ऑन द 38th फ्लोर. तो यहाँ से वो जो गाड़ियाँ हैं, वो इतनी छोटी-छोटी नज़र आती हैं. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. और यहाँ पर एक बड़ा सा वार्डरोब है. ये देखिए. और काफ़ी सारे ड्रॉर्स भी हैं. So overall, as you can see, this room is really spacious. और ये बाथ एरिया है. यहाँ पर एक अच्छा सा टब है. So I'm really happy. दोपहर को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद शाम को मैं गई सिंगापुर फ्लायर की राइड करने. इस राइड के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन वो अगले एपिसोड में. फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए. सी यू सून.